हेलो डियर फ्रेंड्स एंड पेंशनर्स। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से बैंक स्ट्रीम की एक छोटी सी अपडेट में। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हाई कोर्ट ऑफ जुरिसडिक्शन फॉर राजस्थान एट जोधपुर उनकी तरफ से जो अभी हाल ही में लेटेस्ट ऑर्डर आया है उसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे विद ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विद द ऑफिशियल अपडेट। तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं यूनियन ऑफ इंडिया के साथ ये केस था मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली राजस्थान ग्रामीण बैंक जॉइंट वेंचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान एंड SPBJ थ्रू पर्सनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेड ऑफिस तुलसी टावर। तो ब्रांच मैनेजर राजस्थान ग्रामीण बैंक ब्रांच मालवदा तहसील रैनावादा डिस्ट्रिक्ट जलौर उनकी तरफ से जो केस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हॉनरेबल जस्टिस रेखा Borana order the present writ petition has been filed with a prayer for grant of compassionate appointment to petition number 2 who is son of the deceased employee. The fact of the case is that are that the husband of petition number 1 and father of petition number 2 who were class 4 employee with the respondent bank expired on 2nd of November 2014 while in service soon after the death of an employee. उसके बाद दोस्तों इसमें होता क्या, एन एप्लीकेशन वाज मूव्ड बाय पिटिशन नंबर 1 द वाइफ ऑफ डिसीज्ड एम्प्लॉय on 14 to the respondent bank with a prayer for compassionate appointment to her son. The application was not considered for a long time and ultimately wide communication dated 2017 में आता है with there is no scheme for compassionate appointment is in existence and the case of petitioner would be considered and when any scheme is introduced. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अग्रीव्ड अगेंस्ट द पर कॉन्ट्रा लर्नड काउंसिल फ्रॉम फॉर द रेस्पोनेंट सबमिटेड दैट द स्कीम ऑफ 2014 वाज नॉट एप्लीकेबल ऑन द रेस्पोनेंट बैंक एज द सेम वाज नॉट नेवर अडॉप्टेड बाय इट. सो ही सबमिटेड दैट द स्कीम फॉर compassionate appointment was adopted by the respondent bank only in the year 2019 and was made applicable with effecting from 15th of March. तो 15 मार्च से वो स्कीम उस बैंक में एप्लीकेबल हुई. सो काउंसिल सबमिटेड दैट द सेट स्कीम ऑफ 2019 वुड नॉट बी एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस एज द एम्प्लॉय एक्सपायर्ड इन द ईयर 2014 एंड द पॉलिसी एप्लीकेबल फॉर द वुड बी द पॉलिसी ऑफ 2006 ओनली. सो दैट इज एक्स ग्रेशिया learned counsel relied upon the apex court judgment in the case of state of Madhya Pradesh. So heard learned counsel for the parties and pursued the material available on record. So a pursuit of the record shows that soon after the death of the employee by communication 2014, the manager of the respondent bank was directed by higher authorities to inform the legal representatives of the deceased जो यहाँ पे हैं बैंक्स. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो भी है, सो द एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्कीम फॉर एलिजिबल डिपेंडेंट शुड नॉर्मली बी कंसिडर अप टू 5 years फ्रॉम डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड्स एंड डिसीजन टू बी टेकन ऑन मेरिट इन ईच केस. सो however bank can consider request for compassionate appoint even when the death or retirement on medical ground of the employee took place long back, that is even 5 years ago. So while considering such belated request, it should however be kept in view that the concept of compassionate appointment is largely related to the need for immediate assistance to the family of employee in order to relieve it from the economic distress. So the very fact that the employee has been able to manage somehow all these years should normally be taken as adequate proof that the family had some uh, dependable means of subsistence. So therefore examination of such case would call for a request deal of circumspection. So the decision to make appointment on compassionate ground in such case may therefore be taken only at the board level. So in view of the above observation, this court is of the specific opinion that the application of petition number 1 for compassionate appointment deserve to be considered in light of clause 8 of scheme of the 2019. So accordingly the present writ petition is disposed of with a direction to the respondent bank to consider the application of petition number 1 for compassionate appointment specifically in the term of clause 8 of scheme 2019, and if on consideration the petition number 2 is otherwise found entitled, he be granted compassionate appointment within a period of 3 months from the date of receipt of present order. So all the pending application जो भी हैं वो यहाँ पे stands disposed of. तो यहाँ पे ये राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से वेब कॉपी है दोस्तों.
सो ये वेब कॉपी जस्ट वी हैव रिसीव्ड, सो वी थॉट टू शेयर अमंग ऑल ऑफ you.